It is very rare when you get to talk about your favorite team with so much to talk about, with so many things to be happy about in the off season. That is what is happening with me today personally. मैं इन सब को जलाने वाला हूँ जोर जोर से आज के अगले 15 से 20 मिनट के अंदर, स्पेशली ये जो बॉटम पे दोनों है ना, इनको तो खासकर, क्योंकि इनका जो हाल है ये हमारा हाल हुआ करता था आज से 15 साल पहले. तो आई कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड, आई एग्जैक्टली नो ये लोग किस चीज के थ्रू जा रहे हैं. वेलकम बैक टू टॉप कॉर्नर. हम लोग आज बात कर रहे हैं, as you might have guessed, about Liverpool and the unnaturally very busy transfer market that they've had so far. And me being a hardcore Liverpool fan over the last 20-22 years, it just feels good. For a change, it feels very, very, very good. Somehow. I don't know what will happen in the future. बट आज की डेट में मजा आ रहा है भाई साहब. सो हाँ, कहाँ से करेंगे चालू? कौन करेगा चालू? So as a cutter Manchester United fan, seeing your transfer window, see we were very happy with that 10 million की lollipop जो आपको ट्रेंड के लिए मिली थी. Okay, but उसके बाद to be fair, it's not going well for us and it's looking for scary for everyone. क्योंकि आपका last year का problems जो थे, you are kind of have sorted things out, बोल सकते हैं ये लोग. We'll talk about it. अभी एक एक करके चलते हैं उसमें. But if you see Liverpool का, we all were very happy. शिवम भैया आप भी एग्री करोगे, जब क्लब छोड़ के गया था हमको लगा था कि भाई हमेशा सिटी हमेशा रहता था. अभी लिवरपूल भी खत्म हो रही है, अभी थोड़ी मीन्स लिटरली लगेगी हमको, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा. हाँ भाई वो बॉल्डी ने जो काम किया है आपके टीम के साथ, हमारा वाला बॉल्डी क्यों नहीं चला मैं सोच रहा हूँ. एक वाला बॉल्डी चल गया, वो बॉडी वाला चल गया, हमारा वाला बॉल्डी हमको ही चला के चला गया. सो कमिंग टू लिवरपूल, they had a very great season. चैंपियंस लीग में you guys were very good starting में, फिर जो हगे हो आप सेमीफाइनल में disastrous. Then राउंड ऑफ 16 भाई, सेमी तो हम पहुंचे ही नहीं, राउंड ऑफ 16 में हार गए थे. राउंड ऑफ 16 में ही खत्म हुआ आपका. देन न्यूकासल से आप लोग लीग कप हार गए, लेजेंडरी मिकी माउस ट्रॉफी. फिर एफए कप में भी आप निकल गए. तो रहा प्रीमियर लीग, जो कि आपका एक ही कंपटीशन था, वो था आर्सेनल. जिसको इवन अगर एवर्टन भी अगर ऊपर होगी ना, वो आर्सेनल को खुद कंपटीशन नहीं मानेगी. और वो तो आप अक्टूबर से जीत गए थे प्रीमियर लीग. सो कमिंग टू दिस, हाउ डू यू सी द ट्रेंड के जाने के बाद, इज द गैप ऑफ ट्रेंड, आपको क्या लगता है, विद फ्लोरियन वर्ड्स, फ्रिंगपोंग, केरकेज, और अभी तो और भी कभी कोई आना है. एफएसजीआर म्यूजियम हो चुका है, बट अलग चीज है. देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, as a Liverpool fan, you don't expect this much activity, especially these kinds of fees, transfer fees and all, honestly. क्योंकि स्पेशली फ्लोरियन वर्ड्स वाला हमने नहीं सोचा था कि ये इतने पैसे एक्चुअली दे सकते हैं और दे देंगे. That was a very surprising thing. That was a very surprising thing. That was a very surprising thing for all Liverpool fans. But if you're talking about the transfer activity so far, I'll just recap it for everybody. बोलना में बड़ा आसान लगता है ये वैभव जैसों को कि प्रीमियर लीग तो आसानी से जीत गए आप. इतनी आसान होती तो आप लोग 15 पे नहीं होते. लेट्स जस्ट लीव इट एट दैट. He had to slip that in, by the way. Obviously. ये कब से लगा हुआ 2 मिनट से बगैती कर रहा है, 2 मिनट से बगैती कर रहा है. रुक यार, कहीं तो रुक, रास्ते में शर्म कर थोड़ी सी, और कुछ नहीं आ रहा तो at this point in time, if you're talking about the Liverpool squad, one major change that everybody knows about, Trent Alexander-Arnold, who was basically our most creative outlet, so to speak, on the pitch, he left on a free. वो जो 10 million का था, that was mostly a bullying tactic by Liverpool almost, कि मैड्रिड को चाहिए था क्लब वर्ल्ड कप के लिए राइट बैक, नहीं था उनके पास. लिवरपूल वाज लाइक हम नहीं देंगे पैसे तो. So that was 10 million for a free transfer. I don't mind it. And we've all seen how Trent Alexander has gone about it, how he's basically hung everybody out to dry. Okay, good riddance. In terms of replacement, we will come to that as well someday. We will come to that as well someday. Yes, we will come to that. In terms of replacement, एक right back हमारे squad में था already, who's actually a good right back in terms of his overall output on the pitch. Connor Bradley. Defensively वो काफी अच्छा है, no doubt. Going forward, he's improving. I'm not saying he's at Trent's level. I don't think anybody is at Trent's level today going forward.
across the maybe Hakimi, apart from that nobody है. तो वो expect करना गलत है obviously. Then you have Frimpong who's been brought in for more of his attacking output because वो ज्यादा right wing back खेला है rather than right back. अगर आप उसका अभी तक का पिछले कुछ सीजन्स का देखो तो, and he is brilliant in terms of his pace and covering the wing ऊपर नीचे. He's very good with that, no doubt. Honestly, at this point in time, right back department, again, you will miss the creative outlet. No team in the world will say कि we won't miss Trent Alexander-Arnold in terms of his creative output. But we've done as well as we could at this point in time. अगर आप right backs देखो available in the market, कोई बहुत सारे options थे नहीं who could actually emulate that to a certain extent. That is something that might have. Then you come to Florian Wirtz. Again, creativity is something that we needed. You don't get it all from Frimpong and Bradley, obviously. So creativity, and at this point in time, maybe Florian Wirtz was the best young player available on the market because your Michael Olise and Lamine Yamal, these guys are not on the market. So technically, he was the best young player available for Liverpool to have that sort of pull because City was in, Madrid was in, Bayern Munich was in. Madrid was in very fleetingly towards the very end, but City and Bayern बहुत ज़्यादा actually active थे. I think Bayern बहुत ज़्यादा था. City I'm not. नहीं, City बहुत Bayern. City was the first one. City was the first one, and City साथ हो गए थे. City और Bayern थे रेस में. They were not Madrid का भी था. City was not. City was not outbid. सिटी का वो था कि they were not able to guarantee पेप गार्डियोला कितने टाइम तक रुकेगा. पेप गार्डियोला ने अभी तक ये कमिट नहीं किया है कि 27 के बाद रुकेगा, and that obviously plays a huge role. For a player this young, आपको चाहिए ना कि अगर मैं अगले 5-6 साल के लिए किसी क्लब में ज्वाइन कर रहा हूँ तो जो मैनेजर मेरे को बुला रहा है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से वो हो तो सही वहां पे. And that is a big drawback. Bayern wasn't able to offer him that same level of freedom, so to speak, on the pitch because already उनके पास अगर आप देखो मूसियाला है, ओलिस है, उन पोजीशंस के आसपास. तो as a project, Liverpool stood out for him. I'm really happy for that. Obviously, he's a very exciting player. In terms of आप अगर उसका goals और assist output देखो, not being a striker, not even being the front three का part as actively, he's been very good in Europe अभी तक. So he's obviously going to be a very exciting addition. अब कैसे होगा translate यार वो you would never know. You don't know how first season will go. You don't know. Again, in terms of potential, that is a fantastic sign. But ये दोनों साइनिंग ऐसे नहीं था जो भाई मर जाएंगे. मतलब पिछले सीजन में एक बहुत बड़ा गैप दिख गया हमें. फ्लोरिन वर्ट्स के पोजीशन में तो कोई बहुत बड़ा गैप नहीं दिखा हमें पिछले सीजन. ऑनेस्टली एक जो गैप था पिछले सीजन में बहुत बड़ा गैप वाज कर्केज वाला लेफ्ट बैक. एंडी रॉबर्टसन के लेग्स जेन्युइनली वेंट पिछले सीजन में. एंड आप अगर सिमिकास का देखो तो ही इज नॉट एट दैट लेवल अनफॉर्चुनेटली. एग्जैक्टली बीच में आया है वो बट ही इज नॉट बीन एट दैट लेवल अनफॉर्चुनेटली. तो कर्केज वाज अ साइनिंग. ही इज ऑलमोस्ट रॉबर्टसन मोल्ड वाला प्लेयर. बिल्कुल अगर आप उसको खेलते हुए देखो बॉम्बिंग अप एंड डाउन जिस तरह से वो ओवरलैप करता है, ही इज वेरी सिमिलर टू द रॉबर्टसन मोल्ड. तो वी आर पॉसिबली गेटिंग अ लाइक फॉर लाइक ऑलमोस्ट रॉबर्टसन का, अ यंगर रॉबर्टसन इफ यू विल. हल सिटी वाला रॉबर्टसन. हाँ, हल सिटी वाला रॉबर्टसन. सो दैट इज समथिंग ऑनेस्टली बोलूं सबसे ज्यादा खुशी मुझे उस साइनिंग की है बिकॉज वो एक हमारे स्क्वाड में बहुत मेजर इशू था लास्ट ईयर. इट्स नॉट जस्ट स्क्वाड, प्लेइंग 11 में मेजर इशू था वो लास्ट. सबसे ज्यादा खुशी मुझे उसकी क्योंकि बहुत अटैक आए हैं उस तरफ. सो आई जस्ट वांट टू आस्क, अभी हमारे दो अभी है तो एक टॉटनहम मेरे फैन ऊपर है और वन फेलो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन मेरे साइड में है. सो आई वांट टू आस्क यू टू, हाउ डू यू सी एज न्यूट्रल, थोड़ा न्यूट्रल हो जाते हैं, आपको कैसा लग रहा है एज ए न्यूट्रल लिवरपूल का ये ट्रांसफर विंडो कैसा गया आपको? पहले टॉटनहम फैन से शुरू करते हैं. देखो लिवरपूल से इतना तो बेटर है नहीं अपना. तो वो जो भी करे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपना कंपटीशन ही वो नहीं है. बात कर चैंपियंस लीग फाइनल खेले थे तुम दोनों साथ में. सबसे घटिया वाला फाइनल था वो. तो वो अलग बात है. तो हमारा कंपटीशन था यहाँ नीचे बैठे मैनचेस्टर वाले. आप लोग कैसे नहीं करोगे ना फिर जाके मतलब दिल को लगेगी ये चीजें. भाई क्या भाई ठीक है अगर चला जाए या फिर रीड्स अगर चला जाता मैनचेस्टर ना भाई हम तो जहर पी रहे थे टॉटनहम वाले. तो वो एक चीज है. लेकिन सुजय भाई मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा आपकी एक बात को
कि आप बोल रहे हैं कि आपको नहीं लगाते फ्लोरियन विर्ट्ज के लिए इतना पैसा दे देंगे। भाई काइसेडो के लिए जो पैसा निकाला था, बिड मारा था, वो आपको भी लग रहा था क्या बाकियों की तरह कि भाई ऐसे ही कर दिया है, नहीं 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 लेने वाले इतना पैसा? नहीं, अगर काइसेडो मान जाता तो ले लेते उसको ऑब्वियसली, बट ऑनेस्टली स्पेशली लास्ट सीजन के बाद ना मेरे को लगा नहीं था एक प्लेयर पे इतना जाएंगे। दैट वाज माय ओनली थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि वर्ड्स के लिए नहीं जाएंगे। आई वाज स्लाइटली सरप्राइज्ड कि एकदम से चले गए, एंड जेन्युइनली हैप्पी दैट दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट अपील टू अ वेरी वेरी एक्साइटिंग यंगस्टर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सुदीप, अभी शिवम भैया, आपको एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, आप तो बहुत टाइम से देख रहे हो लिवरपूल, और मुझसे बहुत ज्यादा टाइम से देख रहे हो, सो आपको लास्ट कैसा लगा था कि मींस इतना बड़ी अमाउंट में लिवरपूल पैसा खर्च रही है फॉर इन अ सिंगल ट्रांसफर? Yeah, that of all the things, because I've seen Liverpool play poorly over the years, and I've seen them play wonderfully in recent years, and now I've seen them achieving things. कभी अच्छा नहीं लगता, but ठीक है, उतना बुरा भी नहीं लगता. It's a club I can respect. The surprising thing is that they are spending a lot of money on one or two players over the past few windows. Still, they have, like on Nunez, they spent a little on Keita. अब market भी inflate हो रही है, तो अमाउंट भी थोड़ा ज्यादा लगता ही है. बट लिवरपूल ट्रेडिशनली बहुत बड़े ट्रांसफर्स नहीं करती थी. व्हेन दे वर नॉट डूइंग ग्रेट, तब भी बड़े पैसे इतनी जल्दी नहीं होते थे, कम कम होते थे. So that is a surprise. It is a surprise कि Liverpool with FSG, who are kind of known for not spending in the manner that some of the big clubs do, especially in Premier League. FSG do not do that. There's a meme also, Klopp का एक मीम चल रहा है मार्केट पे, when Klopp sees कि इतना खर्च कर रहे हैं, Klopp का वो जो टाइगर वाला आ रहा. But I think that's what has helped Liverpool, like being stable over the past, especially since Klopp arrived. They became stable. They were always in contention for winning. They could have won more if City wasn't there, and they were always in contention for winning, always in top 4. अगर एक बार कोई स्लिप हुए होंगे तो हुए होंगे, it's very tough, but top 2, top 3 easy. So now they have that backing. They have won in recent times. So up they have confidence to be able to build on what Klopp did. Kudos to the management for choosing a great successor in Slot after Klopp went. उसी स्टाइल ऑफ प्ले में थोड़ा सा चेंज करके, और अब उनको पता है कि यार यही स्टाइल ऑफ प्ले अभी हम और लंबा चलाएंगे तो उस हिसाब के प्लेयर्स भी ला सकते हैं. Getting Wirtz is again, he's brilliant prospect, and then you have Kirkes. Again, he had a brilliant season for Bournemouth, and who's the other guy? Frimpong. So, yeah, Frimpong is another really good signing, especially on the right. Trent gone. I think he'll prove to be. I think he'll become a Liverpool fan favorite very soon, considering वो Trent की जगह खा रहा है, तो I think that's also gonna be possibly. Okay. And guys, this might not be where Liverpool say, let's stop now. After winning, spend करना, that is big. That means they have high ambitions. And अभी तो ट्रांसफर विंडो शुरू हुई है in a way. अभी तो एक छोटा सा विंडो क्लोज हुआ है. What more can we expect from Liverpool in terms of transfers? देखो मैं बताता हूँ. See, like I said, left back and right back were positions that we needed to address. Apart from that, there are quite a few positions that we actually need to address. Striker is one of them, honestly, because Nunes has not fired as much as we all were hoping and probably expecting. Jota is always injured. Exactly. Diogo Jota is always injured, and जब वो इंजरी से वापस आता है उसको टाइम लगता है थोड़ा सा रिदम पकड़ने में. जब तक रिदम पकड़ता है तब तक वापस फिर इंजर्ड हो जाता है. So, and then you have your Gakpos and Diaz's who can play the false nine role almost, but they're not as well suited there. So you have a thing striker department, unless आप Wirtz को as a false nine almost Roberto Firmino role देख रहे हो. I don't see that happening. I think Wirtz is a number 10 or a left wing. I think it's a number 10 or a left wing type situation. But in that case, then you still need a striker. You still need a good striker if you move Nunes on. थोड़ा सा पैसा चाहे मिल जाए उसमें. एक और हो जाएगा कि आपका अभी कोनाटे के साथ का कोनाटे भी वहीं आ रहा हूँ मैं. वहीं आ रहा हूँ. तो डिफेंस में आपको क्या लगता है? वहीं आ रहा हूँ. So then you come to the deeper midfield role. आपका number 6 Gravenberch, the experiment worked very well, but he played so much football.
सीजन के एंड तक आते आते वो खत्म हो गया था बंदा. He was running on fumes almost. That was, and Endo isn't as trusted by Slot. Again, every manager has their own pattern and the kind of players they prefer. That is completely up to them. So you still probably need somebody as a number 6 ka cover, unless the manager is feeling confident to go into the season with so much on the line, because चैंपियंस लीग वाला जो हम राउंड ऑफ 16 की बात करते हैं, दैट वाज आल्सो अ लेग सिचुएशन. लीग का फाइनल आल्सो वाज अ लेग सिचुएशन. तब तक खत्म हो गए थे ये लोग सारे. तो दैट इज समथिंग दे विल probably need to address. They should think about, honestly speaking. Then you have the defense wala situation, which is something that Bevo just brought it up. Konate apparently hasn't signed the contract yet, and उसका फाइनल ईयर हो जाएगा, फाइनल सीजन है ये कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट सीजन ही इज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो Real Madrid incoming, bro. possibly. So Madrid से हाय. नहीं, and on मुझे नहीं लगता. top of that Jarell Konza, a very good young prospect in terms of 30 the million to Bayern Leverkusen. exactly. He's gone Also, to Bayer Leverkusen and Harvey Elliott also is chasing. going out. हाँ, Harvey Elliott is also going out. हार्वे I'm लिए hearing वो देखो तो- यार, वर्ड्स आ गए. अभी आता हूँ मैं आउटगोइंग्स पे. बट क्वांजा चला गया. सो टेक्निकली हमारे पास 4 सेंट्रल डिफेंडर थे लास्ट सीजन अगर बात करें. वैन डाइक, कोनाटे, जो गोमेज एंड क्वांजा. हाँ. Kwanzaa, after his rise the season before, he wasn't able to perform at that level, unfortunately, last season. Konate, we were very fortunate कि उसे उतनी इंजरीज नहीं हुई जो उससे पहले 2-3 साल में हो रही थी. तो Konate and Van Dijk at least लीग में was a stable part. Gomez is very injury prone. हर थोड़े टाइम बाद उसको इंजरी होती है. अब क्वांजा चला गया है. वी आर डाउन टू 3 सेंट्रल डिफेंडर्स, विच हम लोग 4 पे भी बहुत कम थे. 3 पे तो हम लोग 4 में से एक यंग, एक इंजरी प्रोन. उनमें से अब यंग वाला चला ही गया, इंजरी प्रोन बचा है आपके पास बैकअप. That is going to be a big issue. You have to have central defenders, and they are linked with a couple. Mark Gahey is the bigger name sort of, but एक फेनरूड का भी प्लेयर है, मैं भूल गया नाम उसका, और भी एक दो हैं. We are linked to a couple of we are linked to a couple of players. Honestly speaking, Mark Gahey can be a fantastic signing, no doubt about it. I don't know, अगर कोनाटे आउटराइट मना कर देता है कि मैं साइन नहीं करूंगा, तो गेही को कोनाटे को बेंच पे उठाओ, बैठ साले पूरा साल. बिकॉज अगर उसको ये बोल दिया कि तेरे को पूरा साल नहीं खिलाएंगे, अगले साल है वर्ल्ड कप, एंड इन अ वर्ल्ड कप ईयर, नहीं, इन अ वर्ल्ड कप ईयर अ प्लेयर विल नॉट वांट टू be on the bench. If you are holding the club ransom, the club can actually hold you ransom, especially in a World Cup year. So that is something if that is happening, karo, why not, है ना? Even then, भाई भाई मैंने एक चीज central defenders. एक चीज सुना है मैंने. हाँ, एक चीज मैंने सुना है कि he is asking for 200K per week. और एक फनी स्टार आपको बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के आसपास होते हैं. नहीं, एक फनी चीज बताऊं. डेविड एटर फोफाना चेल्सी में जो है, वो 200K से ऊपर कमाता है, जो कि हमेशा इंजर्ड रहता है. भाई मैं कह रहा हूँ, वो तो चलो अलग ही सिचुएशन हो गया. बट स्पीकिंग ऑफ द लिवरपूल स्क्वाड राइट नाउ, दैट इज समथिंग दैट दे स्टिल नीड. दे नीड एटलीस्ट 2 सेंट्रल डिफेंडर्स. दे नीड एटलीस्ट one striker who can stay fit and can score goals. Very hard to find. हम लोग कल या परसों में वीडियो करने वाले हैं नंबर 9 पे. We'll talk about strikers available right now and the dying art of the number 9 somehow. But these are 3 players that they need to sign on priority, because Kwanzaa चला गया, Nat Phillips चला गया, another central defender. Again, he wasn't playing enough, but चला गया. ट्रेंट चला गया. आप हार्वी एलियट के जाने के चांसेस बन रहे हैं. नूनेज को नापोली चेज कर रही है apparently. So लुइस डियाज को बारका, नहीं, बारसा इज गॉन फॉर निको विलियम्स नहीं, कंप्लीटली. लुइस डियाज कैन बी गो टू बारसा और अल नसर, उसके बीच में चल रहा है. He's not coming to Barca भाई. Barca is already. देखो, लुइस अगर अल नसर गया तो उसके मिलेंगे 75-85 मिलियन. I don't mind that, honestly speaking. You can at least bring somebody in there. So there are a lot of conversations going around, but at this point in time, for all the exciting transfer activity, we are still at least a couple of players short from being able to challenge on all fronts next season. Okay, इसको थोड़ा करते हैं. तो लास्ट क्वेश्चन टू यू, टॉप 3. सो अभी लिवरपूल का जो ट्रांसफर विंडो आपको देखा है, सो अगर आपको चॉइस मिली कि अगर आपको एक साइनिंग करनी है, एक प्रोलिफिक स्ट्राइकर, नहीं तो एक प्रोलिफिक डिफेंडर, तीनों को जल्दी से आंसर दे दो, क्या साइन करोगे लिवरपूल के लिए एज अ न्यूट्रल? I'd say Rasmus Højlund from United to Liverpool, striker में.
and भाई ये तो न्यूट्रल चीज नहीं हुई फिर ये neutral है बिल्कुल. Sorry. Why would I want Liverpool to sign a striker? What will suit them though as a neutral? Isak or मतलब Isak is too big a signing though. I don't think that'll happen. But if they are in for a striker, if it's a big striker, I think there are some names going around Ekitike and all, and I think one of them could suit Liverpool. Centre back Mark Guehi is a player that since the Euros, I believe I've said it as well. I see him in Liverpool. I just see him in Liverpool. आपको एक बोलना, एक करना है आपको, एक बोलना. Guehi, I think Guehi जाएगा भी for the most part. Okay, Rex भाई आपका? I think they will need a center back because वो एक चीज हो जाती है ना कि आपके पास दोनों ही आपके डिफेंडर्स इंजरी प्रोन है. अगर एक को भी इंजरी हो गई ना तो सीजन डिले होता है. हाँ, वैन डाइक नहीं इंजरी मतलब उतना, बट हाँ कोनाटे तो होता ही रहता है. और यही का प्रॉब्लम ये है ना, वो क्रिस्टल पैलेस के लिए हर मैच स्टार्ट करता है. उसको गारंटीड मिनट्स चाहिए क्योंकि उसको इंग्लैंड के स्क्वाड में आना है. वो वहां पे भी स्टार्ट करता है. तो अगर उसको ये मिल जाता है एश्योरिटी कि हाँ तू भाई यहाँ पे आएगा, हर मैच स्टार्ट करेगा, कोनाटे को हम बेच रहे हैं, फिर वो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. उसी दिन जिस दिन कोनाटे बिकेगा वो आ जाएगा. ठीक है. और ही इज अ नीड फॉर लिवरपूल टू sustain this winning momentum going into the next season. Okay, सुजय भाई शॉर्ट आंसर, क्या चाहिए आपको, स्ट्राइकर या डिफेंडर? देखो, अगर दोनों में से एक ही चूज कर सकते हो तो डिफेंडर, बिकॉज वी आर लाइट इन दैट डिपार्टमेंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एट दिस पॉइंट इन टाइम. वो तो तुम बड़ी जल्दी साला को स्ट्राइकर पे खिलाने लगे जाओगे. नहीं, बट दैट्स अगर आपको ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो फिर तो आप अगर इस स्क्वाड को इंटैक्ट रखो और एक डिफेंडर ऐड करो फिर, और तो कोई नथिंग एल्स मेक्स सेंस. आई थिंक वी कैन एंड देयर. I think that is about it. Honestly, again, very happy as a Liverpool fan for the project that is happening at this point in time, for the areas they are covering. I just hope it clicks. So ज़्यादा क्या ही, I hope it doesn't. fair. I think यहाँ पे एंड कर सकते हैं भाई लोग. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. आप लोगों के हिसाब से कैसा चल रहा है लिवरपूल का प्रोजेक्ट? आई नो बहुत सारे लोग मजे लेने वाले हैं कमेंट्स में, तो प्लीज आ जाओ, सब मजे लेते हैं मिलके एक दूसरे के. एंड वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करते हुए जाना जरूर से. चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़े से वीडियोस को शेयर करो यार, सब्सक्राइबर बेस बढ़वाओ. 88 पहुंच गए हम लोग, 12 और करवा दो यार, किसी तरह 100 करें कम से कम, अच्छा तो लगे. इंडियन क्रिकेट वाले इतनी सारे 100 कर गए, हम भी करें 100, मजा आएगा. तो या गेट ऑन इट भाई लोग, प्लीज गेट ऑन इट. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.